Assalamualaikum. Good evening, everyone. Welcome to another episode of the Heena Siddiqi show on Canada One TV. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे। एक और एपिसोड के साथ, एक और टॉपिक के साथ और एक और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की मुलाकात जो होगी आपकी एक ऐसी शख्सियत से होगी जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप उनको पहले भी शो पे देख चुके हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम उनसे सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अगेन फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप और कमिटमेंट्स और मैरिजेस, इनके इर्द गिर्द होगा। इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आजकल के दौर में आप देख रहे हैं शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन शादियों को निभाने के लिए जो चीज़ें मिसिंग हैं या कह लें जो फैक्टर्स मिसिंग हैं हमारे इन कपल्स की लाइफ में, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि हमारा एक दौर चल पड़ा है कि शादियां जितनी तेज़ी से हो रही हैं उनका फॉल उतनी जल्दी ही हो रहा है। बहुत सारे कंसर्न एड्रेस करने हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो इस मैरिज के जो लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है उसको बहुत आसानी से ब्रेक कर देता है। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो बातें हैं जो हमारे इस मैरिज की लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है, एक प्रॉमिसिंग कह लें कि एक फ्यूचर दे सकती हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीना मेनन फ्रॉम मुस्लिम मैट्रिमोनियल। तो चलिए वेलकम करते हैं इनका और करते हैं इनसे मजीद गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम यास्मीना। वालेकुम अस्सलाम हिना। How are you doing tonight? Alhamdulillah, alhamdulillah. How are you doing? Alhamdulillah, alhamdulillah. Welcome back, and after such a long time we are meeting again. Yes, it has always been a pleasure coming and talking with you, but this time we have gone a little too long. Yes. And we have come back again. Alhamdulillah. May Allah, make all our events and all our programs successful, inshallah. Alhamdulillah, very nice. Also, like अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने एक इवेंट किया था, recent इवेंट किया था, कपल्स का इवेंट था, I think. तो वो कैसा गया आपका? Alhamdulillah, I keep having these matrimonial events for singles. अच्छा. Every time. सही. And Alhamdulillah, every time I get a huge response. Because मेरा एक USP है. अच्छा. USP ये है जो generally कोई नहीं करता. I only call the candidates for my meetups. अच्छा. पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप को फॉर्मूला से निकाल देती हूँ मैं, ताकि अच्छा. एक टाइम वो बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेते, then Alhamdulillah things move so much more faster, right. and it helps marriages happen much faster, right. when parents are not around, because right. then the parents have their own opinions, here right. the children are making their own decisions, right. so they are more responsible. राइट, एक्चुअली दिस इज़ अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ की सेटिंग्स और लाइफस्टाइल देख के मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा कि बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, वो डिसाइड कर लें ज़रा एक दूसरे से क्या वो चाहते हैं, एंड देन प्रॉब्ली दे कैन ब्रिंग पेरेंट्स आफ्टर. Absolutely. Well, what else is happening in marriage world right now, as you've been exposed to this community, marriage की जो community है, what's the new update? Oh, there are a lot of updates. The divorce rates have increased. Wow. Now this could be due to so many circumstances that are existing today, right. like compatibility factors that people look for. Right. Right? And because one is the divorce rates, second is the marriage. Older couples are coming into the marriage market rather than younger ones, because wow. they give priority to their education and to their careers, right. which should not happen as per our deen. Right. As soon as the person is of marriageable age, they should get married. That's what our religion teaches us. Okay. And third, they are having fewer children. Having fewer children is because the cost of living has gone high. Right. So when cost of living goes high, they prefer not to have children or have fewer children. And what are we doing? हम उन्हीं को follow कर रहे हैं, जैसा कि for example दूसरी communities में जो होता है ना, right. हम उनको follow कर रहे हैं, हम ये नहीं Small believe family, करते, yeah, exactly, so no responsibility. Tawakkul Allah. Right. Allah is the provider of barakah. Right. So if we believe in that, then Alhamdulillah, I would say, have more babies, especially those mothers who are home based, right. because this is one big career for you.
having children and raising the right children is not easy. Right. But Muslims are not doing that now and having fewer children. But I would say reverse the trend. Right. Have more children. This is one of the very big solutions to our problems. And the fourth that is happening is marriage counseling is on the rise. It is because के divorce rates बढ़ रहे हैं. Right. तो at least मैं इस बात की खुशी है for me is that ये couples realize कर रहे हैं कि हमारी marriages we can still get them back. Right. They're not giving up on their marriages without Right. any effort. Right. And that is what is the most beautiful part of our this thing. We are putting the effort to retain our marriages. So Right. alhamdulillah. So as I said, divorce increase हो रहे हैं. Right. People are getting married at the older age. Right. Fewer children. Right. And fourth, marriage counseling is on the rise. So That's it is actually- showing, that's saying a lot. Yeah, usually like especially in our South Asian community, nobody's accepting that it's their fault or it's their problem. It's just that they keep on blaming on each other actually. So that's why probably they're not so much interested before looking into counseling. But now they're aware of that factor that both parties can be right, but there is a person जो कि एक middle person का काम करता है and trying to make the bridge between these two parties. So and of course you are doing the same thing, mashallah. You're also providing the counseling services as well to the couple. Ji, alhamdulillah, we provide counseling and we do it free of charge. We don't charge a penny for our services. So it's actually fi sabilillah. Alhamdulillah, my organization is not only helping people get married, but also we are doing the troubleshooting part of it without any charges to the normal Muslim ummah. Right, so as per your experiences, what are you observing? What is that key content or formula to make marriage happy, and what we can do to make it even better? See, happiness is the most important part of a marriage, except कि अगर कोई unhappy marriage हो रही है, like if a marriage is going through, and it's very important that happiness is a part of your marriage. Now this unhappiness could be coming into the scene because of several factors. Okay. One, I would say, is circumstances. Like for example, उस family के उस वक्त circumstances that they are going through, the couple is going through. Right. The parents are playing a very important role. The family is playing a very important role. So what are the circumstances that is affecting the marriage? Right. Or affecting the happiness of the couple? Right. Second is the acceptance of flaws. Okay. You understand acceptance of flaws, Heena? What does it mean, acceptance of flaws? Acknowledging your mistakes and acknowledging your imperfections, and actually not making a big deal about it and then work around it. Very nicely explained, beautifully explained, I would say. Yes, accepting flaws. Every human being has flaws, weaknesses. कोई perfect नहीं होता, हम इंसान है. It is said we humans always make mistakes. Right. If we were perfect, Allah subhanahu wa ta'ala would have made us angels. Right. But we are humans, we make mistakes, so we have flaws. Now, a marriage happiness depends on how many flaws are there and how you accept this flaw in the person. For example, if somebody does a mistake, the other couple overlooks it and says, that's not very important for me. Don't get angry on certain issues. Like for example, generally anger plays a very important role in breaking up marriages. Definitely. Because जब आप गुस्से में होते हो, तो you do certain things which are very wrong and you're not supposed to do those things. Right. Because these have become a habit into you. Right. So first we talked about circumstances. Right. Then we said acceptance of flaws. Right. And now I'm saying is the habits of the person. Okay. Like for example, we both come from different environments. Right. We have different habits. Right. Like for example, you know, you may come with a family that was raised 4 or 5 children. Right. I may come from a family where I'm the only daughter. Right. So now your habits would be very different from my habits. True. Somebody could be a morning person, somebody could be a late owl. Right. You understand? तो हर एक इंसान एक अलग environment से आता है. Right. तो उसकी habits भी different होती हैं. जैसा कि for example आपकी अम्मा ने आपको always homemade cooked food खिलाया होगा. Right. हो सकता है कि मेरी अम्मा ने मेरे को बाजार का खाना खिलाया because she's a career oriented woman. Right. So I've always eaten food from outside. Right. So I have not learned cooking because my mother never taught me that. Right. Right? So it may be very different habits that we have developed, Over the years. Right. So now moving from
circumstances, Right. habits, acceptance of flaws, Right. and sometimes these things affect your attitude. तो Right. इसमें यह भी हो सकता है कि किसी का एटीट्यूड नेगेटिव हो, किसी का Right. एटीट्यूड पॉजिटिव हो. Right. Somebody's life has been so cruel Right. that वो completely negative. I'm sure you, if I ask you an example, Right. जैसा कि for example, you are married for how many years now? Alhamdulillah, 15 years. 15 years. I'm Right. married for 30 years. Right. Double. Right. Right? Now my own personal experiences in marriages, alhamdulillah, I have had my ups and downs. I have arguments with my husband, but then I have found ways of how to get over them and make my marriage happy. Right. Alhamdulillah. So what today I'm sitting with you and explaining is not only my professional experience, Right. but my personal experience in a marriage, and I am relating that to couples. Right. So this is what I do in couples workshops. Basically, when I do couples workshops, I Right. explain these things, and I make it as an exercise, how they should get over these habits of theirs, Right. how they can help make their marriages happy, because Right. happiness is the most important thing in your marriage. Right. So is there any formula? Is there anything we can do to improve our marriage? Because of a lot of divorces are happening in the community. Yes. See, marriage is something that takes a lot of effort, takes a lot of time in a person or in the couple together. Now, coming from different personalities that you have, everybody has a different. So, somebody could be an extrovert, somebody could be an introvert. So, couples come with different personalities. Now, these personalities have to understand that if you want to make your marriages happy, let's have a quick formula. Okay. Now, there is no shortcuts. I would Right. say there can never be shortcuts in your marriage. आपके shortcuts हो ही नहीं सकते अपने शादी में. If you want to bring happiness, अगर आप खुशी लाना चाहते हो अपने मैरिजेस में, और मैं जनरली ये उर्दू में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि जो हमारे यहाँ पर ऑडियंसेस सुन रहे हैं उनको ये समझ में आवे कि there is something called as a 3A formula. अच्छा. Now ये 3A formula क्या है? ये आपकी 10 साल की मैरिज हो, ये आपकी 20 साल की मैरिज हो, या 50 साल की मैरिज हो, सब पे अप्लाई होगा. सब पे अप्लाई होगा. Okay. ओके. नाउ इसका सिंपल फॉर्मूला 3A's का ये है अटेंशन. अटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैरिज में. फॉर एग्जाम्पल अगर अटेंशन स्पैन ही कम हो गया हमारा. एग्जैक्टली बिकॉज क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम बोलेंगे ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, या समबडी सेज आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माय वाइफ. टाइम इज अ सदका, बिकॉज टुडे टाइम इज मनी. राइट. यू अंडरस्टैंड. तो लोग क्या करते हैं कि जब खाने के टेबल पे बैठते हैं तो वो लोग अपने मैसेजेस को देखते रहते हैं. राइट. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ, कि अपना सेलफोन साइड पे रखो. राइट. और give attention to the person, because when you're talking to anybody, actually, to in any anybody, relation, it applies to right, anybody. right. But I would say ये बहुत important चीज है मैरिज में, Right. कि आप अपने स्पाउस को टाइम दो. Right. आप उनको सुनो, अटेंशन दो. That is the most important part, and trust me, this is very important because situation is like this कि हर इंसान पैसे की तरफ भाग रहा है, अपनी जॉब की तरफ भाग रहा है, और अपने स्पाउसेस को पीछे छोड़ दिए. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वर्किंग, हम एज मदर्स टाइम दे रहे हैं किन चीजों पे? हम टाइम दे रहे हैं अपने करियर्स पे, हम टाइम दे रहे हैं. इसलिए मैंने पहले बताया कि इवन इफ यू आर अ हाउसवाइफ एंड अ मदर, दैट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसी तरह से ये बात भी हम याद रखना चाहिए कि अगर हम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे एंड वो प्लेजर नहीं दे रहे हमारे रिलेशनशिप में, वो कहीं और जाने वाला है उस रिश्ते के लिए. बिकॉज वो प्लेजर जो एक मैरिज से मिलता है, अगर उसको उस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा एक मर्द? ही विल गो आउट. द सेम हैपेंस विद द वुमेन. तो वो औरत क्या करेंगी? शी विल लुक फॉर दैट हैप्पीनेस आउटसाइड हर मैरिज. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से एक अटेंशन देना अपने मैरिज पे, अपने स्पाउस पे. Go out of their way to give this attention to your spouse, and see that will improve your marriage. I can guarantee you this. And this is a very good formula that I'm sharing with you. Beautiful. So first point is attention. Second point is appreciation. Okay. ऐसा नहीं कि ओ जब वो खाना बना ली तो खाना अच्छा है, thank you. Don't take them for granted, right? Yeah. आजकल क्या हो रहा है कि लोग बहुत सिंपल शॉर्टकट ले रहे हैं appreciation में. They are not digging into that appreciation. तो मैं तो बोलूं कि अगर आप किसी को क्या बोलते अप्रिशिएट करना चाहते हैं ना, तो उस बंदे को समझो और उसकी उस क्वालिटी को अप्रिशिएट करो जो सामने नहीं दिख रही है आपके. जैसे कि अच्छा, खाना अच्छा नहीं बना है फिर क्या करें?
खाना नहीं अच्छा बना, that's a different this thing by itself, फिर भी because then it appreciate comes करें। in. That is a very good way actually. That's what I'm asking. Yeah. Sometimes अच्छा नहीं बनता है, नहीं बनता और है, कुछ लेकिन औरतों को तो आता ही नहीं है अच्छा खाना बनाना, उन बेचारी के साथ क्या करना चाहिए? तो भी हस्बैंड्स है ना, वो कई हस्बैंड्स होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा है, एंड दे स्माइल, दे ईट एंड दे गो, बिकॉज देन दे गो टुवर्ड्स या अल्लाह की तरफ, एंड दे अप्रिशिएट एंड दे से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एटलीस्ट खाना आज मेरे सामने रखा है। आज जो सिचुएशन चल रहा है इसराइल में, मतलब पैलेस्टाइन में, गाजा में, लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है। अगर मेरे को सॉल्ट के बगैर खाना भी मिल गया, बिलीव मी, आज जो हम सोचते हैं ना इन चीजों के बारे में, हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे सामने खाना मिल रहा है, भले इसमें सॉल्ट थोड़ा कम है, टेबल पे खाना नसीब हो गया, नसीब हो सर्व गया हो गया हमारे है। को। यस, सो अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें समझें कि सर्टेन क्वालिटी ऑफ योर स्पाउस, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके हस्बैंड बहुत काम कर रहे हैं, राइट, तो माशाल्लाह आज आपने बहुत मेहनत की, आई मेड समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, दैट्स नाइस, मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल कुछ बनाया, एंड मेक हिज फेवरेट डिश एंड फीड हिम। द सेम वे अगर हस्बैंड देखता है कि आज तुमने कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे मेहनत की, उसको वही अप्रिशिएट करना चाहिए। ही शुड लुक इनटू दोस, समटाइम्स हम औरतें इतना एफर्ट डालती है टू लुक गुड फॉर द स्पाउस, राइट, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, a lot of women do to keep themselves young looking, because for their spouse. Now ये बहुत एफर्ट है, एंड हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो हस्बैंड नोटिस तक नहीं करता कि वो बीवी ने कुछ तो चेंज करी अपनी पर्सनालिटी में टू मेक हिम हैप्पी, एंड द सेम वाइस वर्सा। हस्बैंड भी एफर्ट डालते हैं, बहुत काफी हस्बैंड्स हैं जो एफर्ट डालते हैं अपने लुक्स में, अपनी पर्सनालिटी में, ताकि उनकी बीवी उनसे हैप्पी रहे। बट हाउ मेनी बीवीज एक्चुअली अप्रिशिएट दिस फैक्ट? सो आई वुड से फर्स्ट इज, डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड इन द 3A formula? Habit, attention. Second is I don't remember. appreciation. Okay. Second is appreciation. So first was attention, appreciation, okay. appreciation, and the last is adoration. Adoration. सुभान अल्लाह, हम मुसलमान हर एक चीज को अल्लाह सुभान ताला के साथ कनेक्ट करना चाहिए, and there is one hadith which says if Allah allowed someone जिसके सामने हम सिजदा कर सकते थे उनके बाद, अल्लाह सुभान ताला के बाद, then it would be the shohar. Yeah. Now see, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि all shohars are perfect. Right. You understand what I'm trying to say? The same way, हर औरत perfect नहीं होती है. Right. So that was the point when I talked to you about accepting the flaws and accepting them. अल्लाह ने कहीं ना कहीं, if अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको ये बोला है कि इतना position है तुम्हारे husbands का, Right. there is something in it. Right. Otherwise that would not have been said to us. Right. हम औरतें, there are many women among us who actually abuse our husbands. Definitely. We are hit the husbands in anger. Anger issues होते हैं। आपको सुनने में आता है ऐसे केसेस? I come across so many cases. मैं सिर्फ औरतों की नहीं बात करती हूँ, husbands के साइड, दोनों साइड से होते हैं। But learn to appreciate what you have got. Okay. Adoration. Husband अपने wife को सिर्फ adore करे ना, it's a beautiful relationship. In the same way, the wife अपने husband को adore करे ना, it's going to work out perfectly. Right. You understand? So you look for that particular quality अपने husband में जो आप में नहीं है. Simple. मैं आपको बताऊं. Right. I have issues with anger. Right. And I always adore my husband. Right. For the way he handles my anger. Beautiful. Believe me, मेरा एंगर आने में कोई टाइम नहीं लगता, जितना मैं कंट्रोल करती हूँ, आई कंट्रोल माई एंगर अ लॉट, बट अंडरस्टैंड he is a man with a spiritual background, I am a person with a business background, right, but couple for 30 years and we are happy in our relationship. Mashallah. So alhamdulillah, where we have compromised on so many things in our life, right, so the most important that I felt was that I should share with you today is, if you want to make your marriages happy, right, attention, appreciation, and the last is adore your spouses. All right. Alhamdulillah. Beautiful. Well, now it's time for us to take a short break, Yasmeena. तो जल्दी से जाते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं. You don't go anywhere. Keep watching the show.
back to the Heena Siddiqi show on Canada 1 TV. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यास्मीना मेनन फ्रॉम मुस्लिम मैट्रिमोनियल और बात कर रहे हैं आज हम मैरिजेस की, उनकी स्टेबिलिटी की और उनकी लॉन्जेविटी की। तो चलिए बात करते हैं यास्मीना से। वेलकम बैक यास्मीना। थैंक यू सो मच। यास्मीना, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की बहुत सारे कंटेंट पे जो कि रिलेटेड थे हमारे मैरिजेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब मैं बात करूंगी कि क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट वी शुडंट बी डूइंग इन अ मैरिज, जिससे कि ये डिवोर्स की या सेपरेशन की नौबत आए। वेल, जैसा हमने, अगर आपको फर्स्ट सेशन याद है, वी हैव कवर्ड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट। आई मीन ये सब असर करता है आपकी मैरिज के ऊपर। बट देन जब इंसान एफर्ट डालता है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो अपना 3A फॉर्मूला, राइट, उसमें भी आपने एफर्ट डाला, बट हमेशा एक चीज होती है जो आपको नहीं करनी है अपनी मैरिज में। सर्टन थिंग्स, और आई वुड से सेवरल पॉइंट्स जो आप कभी नहीं करना चाहिए अपनी मैरिजेस में। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज, कभी भी अपनी मैरिजेस जब गुस्सा आता है जी, तो एक तो होता है रिएक्शन, राइट। सेकेंडली से फॉर एग्जांपल, मैंने यंगर जनरेशन की जब काउंसलिंग की ना, वो हमेशा सेल फोन पे जाते हैं और एक दूसरे को वेरी वेरी मीन मैसेजेस भेजते हैं। यानी अपनी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन है वो टेक्सटिंग के थ्रू निकाल लेते हैं। टेक्सटिंग के थ्रू निकलती है। आई वुड से नेवर एवर एवर डू दिस ऑफ सेंडिंग मीन मैसेजेस टू ईच अदर, बिकॉज इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। जैसा कि यू नो कुछ टाइम के बाद मैंने, यू वुड थिंक कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी ये बोल के, यू नो जो हमारे बीच में जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप था वो टूट गया। एंड समटाइम हम लोग ऐसा भी होता है कि जो चीजें हम जबान से नहीं कह पाते वो हम राइटिंग के थ्रू कह जाते हैं। समटाइम एक होता है ना, कॉन्शियसनेस अलाउ करती है जब आप बोलना चाहते हैं, आपकी सेंसेस बेसिकली कंट्रोल करती हैं आपको कि नो, आई एम नॉट गोना से दिस टू यू नो फ्रॉम मी, क्योंकि इट्स गोना बी समथिंग बिग, बट यू नो फिंगर्स मूवमेंट एंड जस्ट सोशल मीडिया एंड देन दिस मीडिया। आप एक चीज सोचें ही ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर यू नो मेनी पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू से नो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आती हूँ, बोलती हूँ हिना प्लीज मेरे लिए ये कर देना, अब फेस टू फेस है, you will find it very difficult to say no. I would say how can I say no to Yasmeena? Correct. लेकिन अगर वो सेम चीज मैंने आपको मैसेज पे भेजा और आपको लगता है say yeah, no sorry I'm not available or something, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इनवाइट है, राइट, और मैं I come and I invite you and I say हिना ये मैं कर रही हूँ, I would like to invite you. You'll never ever say no to my invitation. लेकिन वही मैसेज पे अगर आ जाता है, हम कितने आसानी से मना कर देते हैं। We have more room, more area of और possibilities कहने, हम अपने convenience के हिसाब से जवाब देंगे। Exactly. Right. तो messaging, texting should not be a part of solving your problems. So never do that. Second, or solving a resolution for your marriage over texting and communication. Correct. तो इससे हम derive करते हैं कि your communication should be clearer, not on texting and messaging. Right. तो second क्या advice होगी? Normal. It's very normal. Keep your lines of communication open. Okay. So for example, आपको don't गुस्सा भी आ isolate गया, and don't let other person isolate. Exactly. तो अगर आप फर्स्ट गुस्सा आता है, तो there are different ways लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, but there is a hadith of the prophet which says कि अगर आपको गुस्सा आता है तो अगर आप खड़े हो पानी पी लो, ठीक है। अगर खड़े हो के पानी पीने से ठंडा नहीं होता गुस्सा, then sit down and drink. अगर उससे भी ठंडा नहीं होता तो लेट जाओ। Right. Understand? This is a very important hadith for every Muslim to remember. लेकिन समझो कि for example at that point you're so frustrated, मैं तो बोलती हूँ कि just wear your shoes and go out for a walk. Right. Because आप जब leave the environment. Exactly. Leave that environment, that hostile environment. Because वो hostile environment में आप aggressive हो जाते हो, आप abusive हो जाते हो। तो what is the second point is never be abusive or angry in the relationship. Aggressive, yeah. Open your lines of communication. So now हम देख रहे हैं एक situation where a couple is very angry, right, with each other. Now गुस्से में जो argument हो रही है, the husband walks away and he says, I'm just going for a walk and coming back. मैं एक walk लेके आता हूँ वापस। Right. आने के बाद now we are talking about the line of communication. तो क्या करना चाहिए? couple को क्या करना चाहिए? What be the next step? Should they not talk to each other? Don't resolve the issue? That is one option. Right. Second option क्या होगा? Keep at least those
minimum requirement for the communication. So at least they're not saying a lot, but at least communication is there. So at least there is no confusion or complexity about that matter. So आपका solution ये suggestion है आपका कि give some time. Yeah. Don't talk too much on the topic. Yes. Yes. Okay. Now this to keep it cool. Exactly. So to bring it the cool, right? Yeah. तो ठंडी हो जाती है, एक दिन चला जाता है, दूसरे दिन आप क्या करेंगे? So then you can just sit and then talk about it and bring it up ki this is what I feel and this is what I felt that you were feeling this way, but you have to clear it. So now what you're doing, you are coming to the table for discussion. But उससे पहले रात अब गुजर गई, night, right? Yeah. So generally क्या होता है? Generally you are quieter. You are not going to talk on the bed because there are possibilities where the fire can, you know, bring and this and that, and you're gonna be into a heated argument. तो जनरली आप टर्न होके सो जाएंगे और वो टर्न होके वहां पे सो जाएंगे और उस दरमियान अगर वन ऑफ यू डाइज, फौत हो गई, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? Okay. Yeah, that we never thought that way. मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, ये हर एक मुसलमान को सोचना चाहिए कि before I go to sleep, I will resolve my problem with my spouse. Okay, so that is important to resolve. बहुत important है. Forgive each other and something like that. Forgive each other. Okay. और जो इंसान, that is these of the prophet which says जो इंसान दूसरे को forgive करता है has a higher position than the one who doesn't forgive. So you want a higher. See, always look for the pleasure. So you really of have Allah to say it out loud, or you just have to say it in your heart, Yasmeena? No, I would say sit down, discuss before you go to sleep. And you know what? Forgive that person. उसको बोलना कि देखो जो भी हुआ मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो. And आपने जो गलती किया मैं माफ. और अगर आपने गलती किया, you know आपने गलती, it's okay. You can ask for forgiveness. Alhamdulillah. And let's resolve this issue. Then of course he or she is not going to keep quiet. Right. They are going to bring up that topic for discussion. It is going to come out. You understand? So we have to postpone it, or we have to just don't postpone. मैं बोलती हूँ postpone नहीं करो, उसको resolve करो before you go to sleep. This is the best thing that any Muslim. You don't bring it up to the next day. You don't bring it up to the next day because इसमें आप किसका pleasure ढूंढ रहे हो? Go to a higher level. मैं always बोलती हूँ, मेरे से ना लोग argue करते. जैसा कि मैंने देखा है लोग सिंपल व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी, ये मेरी ग्रुप है आप ये नहीं कर सकते हो. सुभान अल्लाह, क्या $1 मिलियन की ग्रुप आप चला रहे हो कि आप इस छोटी सी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हो? You know what I'm trying to say? ये ऐसा है, ये ऐड आप नहीं डाल सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो. I see people arguing on WhatsApp. Actually, you know, that makes even using this platform even more complicated. People just lost interest. I dropped so many groups because of so many complication, rules, this and that. Like life is not simple anymore, it feels like. No, but मैं बोलती हूँ कि you have to rise at a higher platform than the other person. Right. तो अपने आप को उस लेवल पे लेकर आओ कि आप उनसे अल्लाह की नजरों में ऊपर आ गए. Because you are looking for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So that would be my advice. So Yasmeena, that means कि you really have to be the forgiving one. You have to be the bigger person in the marriage. अगर दोनों parties ये सोचने लग जाएंगे, we have to be the bigger person. Exactly. Then there will be no problem. कि you have to change और लड़की बोलेंगी you have to change. Now, change is not what we are looking for. What we are looking for is forgive each other. एक दूसरे को माफ करो, hug करो, you know, प्यार करो एक दूसरे से. Right. You know, live happy, live your life. Bring in happiness into your marriages. Believe me, जिस रात आप वो बैक टर्न करके सो रहे हो, आप पे फरिश्ते लानत भेज रहे हैं. Wow. So that is a big deal for you. You know, you are cutting down your ways to the Jannah. So make your path easy. So rise at a higher level, बात करो, discuss करो, discussions and communication. ये बड़ी workshops होती है communication पे. How to clear your paths of communication, how to make communication easy for each other. End of the day वो क्या बोल रहे हैं कि एक दूसरे से बैठ के बात करो. Simple formula. एक टाइम वो बातचीत हो गई, Alhamdulillah, you're good. फिर समझो कि for example आपने वो problem resolve कर लिया. What comes in? Happiness in your marriage. The next I would say is controlling. Controlling. Stop parenting. Because हमने relationships में ये देखा है कि generally
हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड होता है तो वो वाइफ को बार बार डायरेक्शन देता है, तुम ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम ऐसा करना था, तुम वो करना था, ऐसा नहीं करना, यू नो, देन व्हाट हैपेंस, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है रिलेशनशिप में. यू स्टार्ट अनोइंग योर वाइफ, you know, and this same happens the other way around. There are some women who have got stronger personalities than their spouses. They start dominating. So when you stop parenting, which means you stop controlling. Now अगर आप एक relationship को control कर रहे हो, now I'm telling you, you have a teenage son or daughter? Yes. Okay. आप अपने बेटे या बेटी को control करने की कोशिश करो तो वो बंदा क्या करता है? Trying even breaking more rules. Which in English is rebel. Rebel. He tries to rebel against you. Now rebellion or rebelling against somebody happens in a relationship. Doesn't matter, it's only a parenting relationship. It also happens in a husband and wife relationship. जितना आप अपनी वाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगी जिद पे आके कि मैं इस तरह से नहीं करूंगी, मैं रेबल करूंगी. सेम थिंग, जितना आप अपने मियाँ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगी, वो he will try to rebel. So I would say that's the reason this concept is called as stop parenting. You are spouses. एक दूसरे के बीच में प्यार है, एक दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप है. So keep this relationship live. एक दूसरे से happiness drive करो, and alhamdulillah, Allah will bless you with happiness in that particular relationship. यास्मीना, जैसे कि आपने अभी बताया कि कंट्रोलिंग, पेरेंटिंग, ये सब चीज़ होती है. सो बेसिकली आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट करियर ओरिएंटेशन फॉर बोथ जेंडर्स. सो यहाँ पर जब हम होता है कि एक जो हमारी मेल फिगर है वो उसको ये लगता है कि उसका करियर या उसका वर्क जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक औरत के काम से, करियर से. तो यहाँ पर आप हमें ये समझाएं कि किस जेंडर को कैसे बिहेव करना चाहिए या क्या प्रायोरिटीज है. ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है. This is a very, I can take a whole session inshallah next time we can talk about the careers. I would just like to say कि you know what, ये औरतों का करियर started with this feminist movement. Feminist movement क्या था कि हम मर्दों से इक्वल है, हम मर्दों से compete कर सकते. लेकिन अगर आपने देखा, ये बॉयल डाउन करो ना, हम अपने मर्दों से उनकी जॉब्स निकाल रहे हैं. हम अपने जो मर्द करना चाहिए उनकी जगह हम ले रहे हैं. As women we are taking those. But Allah has made us with a particular role in mind. Allah has made the angels and the humans for worship. मेरी ये बिलीफ है. तो आप जो भी करते हो, अल्लाह अपने नियत पे अपने को बरकत देता है. सो से फॉर एग्जाम्पल, एक औरत डिसाइड करती है कि या अल्लाह, मैं ये जो करियर कर रही हूँ, इससे मैं अपनी जिंदगी की लाइफ इजी करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को स्टेबलाइज करना चाहती हूँ. बिकॉज कनाडा में एक बंदे की इनकम पे लाइफ नहीं चल सकती. हिना, मुश्किल होती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस द हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल. It's very difficult, especially with the mortgage rates that have doubled up. जो 2,500 पे कर रहे थे अपनी mortgage के लिए, आज वो इंसान 5,000 पे कर रहा है. But उसकी इनकम नहीं इंक्रीज हुई है. ये सोचो आप, उस बंदे की इनकम नहीं इंक्रीज हुई है, expenses have gone up. तो जो career oriented women है, alhamdulillah, Allah has not stopped you from having a good career. Allah has not stopped you from pursuing a career of your choice. But say for example, if Allah subhanahu wa ta'ala has given your husband a good career, you don't have to strive. You don't have to prove to anyone anything. You know, ये जो मैं आज तुमको बोल रही हूँ ना, इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ. I'm in my 50s right now. जब मैं 20s में थी, I'm an MBA with marketing and sales. I have had a beautiful career in the corporate world. And alhamdulillah, उसके बाद मैं प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटीज में before coming here to Canada. And in Canada, within 3 months, I got a RBC manager का job. तो आप देखें मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि the moment I felt कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को टाइम चाहिए, मेरा जो corporate world का job था, I gave it up. And मैंने प्रोफेसर, टीचर बन के, like you know, you say teacher. A professor का job इतना अल्हम्दुलिल्लाह beautiful होता है because you are handling people with a creative mind. तो मेरे को ऐसा मिल रहा है कि मेरे को लोगों के mind को mold करने मिल रहा है. At the same time, मैं घर पे हो जाती थी 1:30-2 बजे, because I was a professor. तो मैं 3 बजे तक घर पे पहुंच जाती थी. उसके बाद मेरे बच्चे स्कूल से आ गए, मैं घर पे हूँ to take care of my children. See, as a woman, your priorities have to change. But आज अगर आप मेरे को पूछते हैं ना कि यास्मीन, would you have taken up the career that you did before? I would say नहीं. If Allah subhanahu wa ta'ala had
given me the barakah that I needed to run my family, Right. I should not have been a career-oriented woman. I should have given that time and effort to bring up my children, because वो बच्चे हमारा future है. Definitely. We would have given them more time and taken care of them, given them the love. Because जब वो बच्चों को time चाहिए था, I was traveling in Asia Pacific region, Bangkok, Singapore. What? Handling my career. Right. Alhamdulillah, I was very lucky कि मेरी family बहुत अच्छी थी. मेरे husband Alhamdulillah managed the children. Right. Alhamdulillah, मेरी mother-in-law मेरे साथ lived until I came to Canada. Wow. Though she was a Hindu lady, Right. she was, mashallah, one of the best examples of what a mother-in-law should be. Wow. So ये नहीं होता कि सिर्फ religion से आप नेक इंसान बन सकते हो. Right. नहीं, because मुसलमानों में भी बुरे लोग हैं. Right. Definitely. इस तरह से उनमें भी अच्छे लोग हैं. Right. So alhamdulillah, I was very lucky कि you know what I could not give my family at that time, Right. मेरी family ने compensate कर ली. Right. But again, as I said, अगर मेरे को ये career option मिलता Right. कि आप नई job करो, Right. and somebody had guided me at that point, That time. Yeah. I would have given more time to my family. Instead of having 3, Right. I would have had 6 children. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. I love having children. Alhamdulillah. And you know, अब जब आप देखते हो ना कि सिचुएशन क्या चल रहा है दुनिया में, जिस तरह से हमको मार रहे हैं ये लोग, हर कंट्री में हम मर रहे हैं. बर्मा में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं हमारे लोग, हर कंट्री में, अफगान, इराक, यू नेम द कंट्री, मुसलमान मारा जा रहा है. आज गाजा में अगर आप नंबर ऑफ बच्चों को इन्होंने जितने मारे, मैं तो हर माँ को ये बोलती हूँ एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करो, सिर्फ इन द नेम ऑफ गाजा. My God. इन्होंने हमारे इतने बच्चों को मारा है. हर एक माँ अपने बच्चों को एक, इफ यू आर इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करो, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे, जिस तरह से हमारी लाइफ अल्लाह ने has blessed us with the lifestyle, Right. we should be having more children than what we have. Subhanallah. Wow. Beautiful. Well, I got goosebumps after listening to all that, and seriously, like, the situation is not good. It's very sad. And though we are seeing everything on social media, and a lot of videos are coming out, and that is very depressing. You know, first thing in the morning when you see these things on social media, it's like, you know, you start questioning yourself that where we are going, where this, you know, humanity is going. कि जहाँ पर हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि जब हम इतने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से डील कर रहे हैं, बट द पिक्चर इज नॉट वेरी क्लियर. Oh, believe me, there was a time like I loved our Prime Minister Trudeau, because he was such a genuinely nice person. Right. But वो genuinely nice person is not behaving like a nice person right now. Because वो जो ceasefire होनी थी, he's seeing children die, and he's not calling for a ceasefire. Right. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो you know, generally it's politically motivated. Right. He has to take care of whatever he has to take care of. Right. But what is happening to the Muslims is very, very shocking. Right. और ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है अपनी उम्मत के साथ. Right. तो I would say मेरा रिक्वेस्ट होगा हर मुसलमान से कि अल्लाह से दुआ करो कि गाजा आज जो तकलीफ के थ्रू जा रहा है, वहाँ के लोग जिस तकलीफ के थ्रू जा रहे हैं, और हर इंसान अपनी दुआ में ये करना चाहिए कि उनकी तकलीफें आसान हो जाएं. Definitely, we all should pray for. Inshallah. Yeah, Alhamdulillah. And how would you want to wrap up this session, Yasmeena? कैसे wrap up करना चाहेंगी इस session को? We have talked about, you know, the solution, the changes in the marriage, how we can help. What is the formula? What is the sauce? How do you want to wrap up now? For me, happiness in a marriage is the most important priority, because if there is no happiness, it will not keep the marriage going for a long time. Right. So happiness does matter in your marriage. Right. If it comes to a point of divorce, then there is factors that affected this divorce happening. And there is a hadith of the Prophet which says कि जो Allah subhanahu wa ta'ala does not like is divorces happening, because उसमें क्या होता है कि शैतान फिर जीत जाता है. हम इन अल्लाह के नजरों के सामने वो, it's the winning of the shaitan, which is not acceptable. हम बोलते हैं कि divorces अगर हराम होती तो अल्लाह अलाउ नहीं करता. He did allow us
divorces in certain circumstances. So as Muslims, we need to increase our knowledge and increase our knowledge in how to make your marriages happy. जैसे आप हर चीज में कोर्स करते हो ना, उस तरह से जाके देखो कि what is it. There are so many YouTube videos. मेरे खुद के YouTube videos है online. Anybody can just type in Muslim matrimonial YouTube videos. अगर आप, and please do subscribe to my channel. Because क्या होता है कि जब मैं ऐसे टाइप के वीडियोस बनाती हूँ, एक पर्टिकुलर निश होता है. मुस्लिम मैट्रिमोनियल यूट्यूब का जो हैंडल है आपका क्या है? Muslim matrimonial. Just put Muslim matrimonial and put YouTube videos. या तो मेरा नाम आप डाल दो, YouTube videos, Yasmeena Menon and YouTube videos. And believe me, I do this fi sabilillah. मैंने अपना monetization भी ऑफ कर दिया है. उसमें मैंने किसी को, because मेरे को अल्लाह से बहुत बड़ा खौफ है. आई एम वरिड कि उस पे अगर वो YouTube वाले कोई हराम ऐड डाल देंगे, तो उसका गुनाह मेरे पे आ जाएगा. तो आई अवॉइड वांटिंग एनी हराम ads on my videos, and that's the reason I put off the monetization on my videos. Wow, you're giving us so much knowledge and wisdom. Oh my God. Like, we all are looking for monetization and then everything, how to make money on social media and all that. And you're telling you took the monetization off just to protect your akhirah. Yeah. Because objective. Please Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So now the concept is clear to you, and inshallah we'll hope to see this happening with every Muslim that's out here. You know, find ways to please Allah, and that will bring more happiness in your marriage. Yeah, thank you so much, Yasmeena, for this beautiful session again. And it's always a pleasure to have you on my show. Always learning so much and always enlightening my audience with your knowledge and with your brilliance, I would say. I'm actually nothing. You know, अगर अल्लाह एक ये है कि अगर आपको कुरान के words भी आते हैं ना, दूसरे को सिखाओ. So alhamdulillah, you know, whatever I have learned in my life, I try to teach people as much as possible. So there's a formula of teach, learn, teach. Learn, teach, learn. So आप सीखो, दूसरे को सिखाओ. आप सीखो, दूसरे को share your knowledge. Share your knowledge. Alhamdulillah, that is the best thing that and I'm very humble. Please don't praise me. मेरे को बहुत uncomfortable feel होता है. No, actually you're such a beautiful personality, and also like, you know, मैं बहुत impress होती हूँ लोगों से who are able to keep that path straight in the life in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. This is so inspiring, being a Muslim, just seeing that this life is already complicated and how to make it simple, you know, just to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and also like, you know, you can maintain your deen and dunya both, you know. Yeah, exactly. And it's not difficult. Islam is not difficult. It has laid out a path for you. Just follow that path. Follow the Quran, follow the Sunnah, and you can never go wrong. Thank you so much, and I'll see you again soon. Inshallah. Assalamu alaikum, and you know, hope to see you, all of you again. Thank you, Yasmeena. Thank you. तो ये थी हमारे साथ यास्मीना मेनन फ्रॉम मुस्लिम मैट्रिमोनियल. किसी भी तरह के मैट्रिमोनियल सर्विसेज के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं, विच इज़ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और उसके अलावा यास्मीना की जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो इन्होंने हमें इंस्पायर किया है बहुत सारी चीज़ों से, एजुकेट किया है. तो आई होप यू आर ऑल्सो you know, willing to learn and willing to know more and more. And if you want to do that, then you can go on her YouTube channel Muslim Matrimonial, and you can search by Yasmeena Menon and you will see all her videos. So basically what I wanted to say, support Yasmeena Menon, because what she is doing, she's kind of a seeking pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, जो कि हम सब सीख कर रहे हैं. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई इंसान इस तरह से हमारी कम्युनिटी में काम कर रहा होता है, हमारे दीन को बढ़ाने के लिए, इंसानियत को बढ़ाने के लिए, यू नो, ऐड ऑन करने के लिए, इस नेकी को, इन नियतों को बरकत देने के लिए, तो वी शुड ऑल support this person. So don't forget to write me about this episode in your feedback. Heena Siddiqi 007@gmail.com पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी लास्ट में कि अगर आपको किसी भी तरह की मार्केटिंग सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप या फिर पेड प्रमोशंस की ज़रूरत है, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी एट द सेम ईमेल एड्रेस. अब इजाज़त लेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी वेंसडे 8 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. गुड नाइट, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़.
कीप वॉचिंग Canada 1 TV.